we are going to be learning these two columns. और हम जो है अभी जो हाईलाइट किया है वो वाले जो दो कॉलम्स हैं जहाँ पे हिब्रू और अरामिक लिखा है वो सीखेंगे। इसके अलावा आपको दूसरी जो जुबानें हैं उनके अल्फाबेट्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो दो हैं जो आखिर में लास्ट जो थर्ड और जो वो है सेकंड लास्ट वो हम सीखेंगे। The good news is it's the same alphabet. और अच्छी बात ये है कि ये दोनों जो अल्फाबेट्स हैं ये बिल्कुल एक जैसे ही हैं। We're not going to learn the alphabet from this sheet. और हमने जो अल्फाबेट्स हैं वो इस शीट से नहीं सीखने। This sheet is to show you the relationship between Arabic, Ethiopic, and the other Semitic languages. और ये जो शीट है वो दरअसल आपको जो है इसका रिलेशनशिप बता रहा है कि अरबी जुबान के अंदर जो इथोपिया की जो जुबान है इथोपिक उसके अंदर और जो नफिशियन है जितने भी इन सारे अल्फाबेट्स का आपस में जो ताल्लुक है वो आपको सिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर आप उर्दू की लैंग्वेज भी डाल सकते हैं तो वो भी इनके साथ ही मिलती है। You all know that the Arabic word salam shows up in Hebrew as shalom. आप सबको पता है कि जो अरबी में या उर्दू में जो हम सलाम कहते हैं तो उसको जब हम अबरानी में या हिब्रू में बोलते हैं तो शलोम कहते हैं। And this chart will help explain why. और ये जो चार्ट आपके सामने है ये इस बात को जो है वो एक्सप्लेन करेगा। The far left column that says Proto-Semitic और सबसे जो आखिर में जो कॉलम है जहाँ पर लिखा हुआ है Proto-Semitic is the ancestor language to all the Semitic languages. ये एक वो जुबान है जिसके अंदर से ये बाकी तमाम जुबानें जो हैं वो निकली हैं। And it doesn't have a name because we don't know what the name was. और हमें इस जुबान का जो है वो मतलब नहीं पता क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सोर्स नहीं है जिससे हमें ये पता चल सके कि जो लोग इस जुबान को इस्तेमाल करते थे उसका नाम उन्होंने क्या दिया था। So we call it Proto or First Semitic. और इसलिए हम इसको जो है प्रोटो-सेमिटिक कहते हैं। प्रोटो का मतलब होता है पहली, तो इसलिए हम इसको जो है प्रोटो-सेमिटिक का नाम खुद देते हैं। And if you'll, and the far left, I just numbered the rows. और सबसे पहले जो है मैंने सिर्फ जो है नंबर्स लिखे हुए हैं कि 1 से जैसे 30 तक लिखे हैं। तो आप ये देखेंगे कुछ लैंग्वेजेस में जो अल्फाबेट्स हैं उनकी तादाद फर्क है। That makes it easy to talk about it. और इससे जो है हमें समझना आसान हो जाता है। So look at row 13. आप जो है 13 जो नंबर है उसको देखें। The original sound, this was the shin in the ancestor language. और ये जो है जो ancestral language है जो पुरानी लैंग्वेज थी इसमें इसको शिन कहते हैं। And you'll notice that in Arabic it's a sh sound, not a sh sound. और लेकिन आप जब अरबी में देखेंगे तो ये इसको स कहते हैं, श नहीं कहते। That's true also in Ethiopic. और जो इथोपिया की जो लैंग्वेज है वहाँ पे भी ऐसा ही है। But in all the other Semitic languages, it's sh. लेकिन जब आप आगे जाते हैं तो आप देखेंगे इन इसी जो साउंड को जो है वो शाह कहते हैं। In the development of the languages, और इसी तरीके से जो कोई भी जुबान जो है वो बढ़ती है। the Semitic languages of the South, जो साउथ की जो सेमिटिक लैंग्वेजेस हैं, flipped the sin and the shin. वो जो दोनों जो हैं इन्होंने ये किया कि जो सीन और जो शीन है उसको जो है वो फ्लिप कर दिया। कुछ इलाकों में सीन पहले आता है और शीन बाद में आता है, कुछ में शीन पहले आता है और सीन बाद में आता है। Whereas languages on the Mediterranean coast up north, on the Syrian Mediterranean coast, लेकिन जब आप मेडिटेरियन कोस्ट के ऊपर जाते हैं they lost the sa sound altogether. लेकिन उनके पास जो है वो सा की जो आवाज है वो है ही नहीं। And so they use sha for both. और उसकी जगह पे वो शह यूज करते हैं। Whereas in Hebrew and in Aramaic, shin and sin were preserved. लेकिन जब आप दोबारा जो है अब्रानी और अरामिक जुबान में आते हैं
तो वहां पर सिन और शिन जो है वो अभी भी मौजूद है, but in the original order. Can you help her find a bathroom, please? Sorry. Thank you. All right. So the purpose of this chart और ये जो आपके सामने जो आपको ये चार्ट दिया गया है, is as we learn Hebrew and Aramaic, जब हम हिब्रू और अरामिक को सीख रहे होंगे, is to show you why it might be different if you know an Arabic or an Ethiopic word. और आपको ये थोड़ा मुख्तलिफ लगेगा अगर आपको जो है अराबिक या अथ्यापिक की जो अल्फाबेट्स अगर आती है. Now, Arabic preserved almost all the original sounds. जो अरबी है उसके अंदर तकरीबन जो पुरानी जो लैंग्वेज है उसके तमाम के तमाम जो साउंड जो हैं वो आपको अभी तक मिलते हैं. Whereas Hebrew and Aramaic, लेकिन अगर आप अबरानी या अरामी जुबान की बात करें, lost some of these sounds. तो उसके अंदर कुछ जो ये जो साउंड्स हैं जो इन अल्फाबेट से निकलते हैं वो हमें नहीं नजर आते. They fell together with other sounds. और हुआ ये कि ये दूसरे साउंड्स के साथ मिलकर ना उसी में जम होकर रह गए. So that originally the th sound और इसका मतलब ये हुआ कि जो थ का साउंड है was preserved in Arabic, वो अरेबिक के अंदर तो मौजूद है, but in Hebrew became a sh. लेकिन जब हम उसको अबरानी में लेके आते हैं तो वो शह कहलाता है, And in Aramaic became a t. लेकिन जब हम अरामी में जाते हैं तो ये त कहते हैं. And there are several of these. और इसी तरह के और भी बहुत ज्यादा है. So this sheet is for reference. और ये जो शीट है ये सिर्फ एक रेफरेंस है जो आपको समझाने के लिए कि कहाँ से जुबान शुरू हुई, बल्कि हमें उसका नाम भी नहीं पता, और फिर जब मुख्तलिफ इलाकों में यही जुबान जो है वो किस तरीके से जो है वो तब्दील होती है. And I will make reference to it from time to time. और मैं आपको जो है वक्त के साथ साथ जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको बताता भी जाएंगे. Sheet is the sheet that we're going to learn the alphabet from. आपको ये सारी सबको ये शीट नजर आ रही है? ओके, तो यहाँ से जो है हम जो है आज सीखेंगे. I can make it bigger, and I will as we go for each letter. They have a huge screen, they should see probably. I'm sorry? They have a big screen, it's like bigger than that. It should be okay. I mean, if you can. All right, I just want them to be able to see. All right. The Hebrew, the Aramaic alphabets are the same alphabet. और जो अरामिक के और हिब्रू के अबरानी के जो अल्फाबेट्स हैं वो मुझे पारी पकड़ा रहा. वो एक जैसे ही हैं. What did she say? No, it's just my problem. Okay. So there is only one column. तो आप ये देखेंगे कि ये जो पहला जो कॉलम है जिसके अंदर आपको हिब्रू के और जो अरामिक हैं वो अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं और वो एक जैसे हैं. जुबानों का नाम फर्क है लेकिन उनके जो अल्फाबेट्स हैं वो एक ही हैं. This column with the Arabic characters is only for pronunciation. और उससे आगे जब आप अरबी के जो देख रहे हैं अल्फाबेट्स वो आपको सिर्फ इसलिए दिखाए गए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इसको बोलना कैसे है, इसकी आवाज कैसे है. The other chart gave you the equivalents. लेकिन जो इससे पहले चार्ट था उसके अंदर वो आपको जो है इक्विवेलेंट बता रहा था कि अगर ये अबरानी में है तो ये अरामी में कैसे, अगर अरामी में है तो ये पुरानी जो लैंग्वेजेस दूसरी है उसके अंदर कैसे है. So the first letter, alpha, you know from Aleph. आपको पता है कि जो पहला जो लेटर है वो अल्फा इसको बोलते हैं और ये अलिफ से है. All right. This chart is different that in the far side, I give the Greek. लेकिन आप जब उसके आखिरी हिस्से में जाते हैं तो आपको जो है वो ग्रीक नजर आता है. And this first letter, let's just talk about Aleph. Aleph in Hebrew works like a Hamza or an Aleph in Arabic.
जो जैसे हम उर्दू में अलिफ बोलते हैं, अरामिक, और जो अरबी है उसमें भी अलिफ बोलते हैं, और इसको जो है अरबी के जो लेटर जो अलफ अलमद अलफ है उसकी तरह लिखा जाता है, लेकिन जब आप इसको कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं एंड में जाके यूनानी के साथ, तो वहां पर जाके आप इसको अल्फा बोलते हैं। So does the alpha work in Urdu just like in Urdu? Yeah. So I don't need to explain. You can explain, so some of them may be. All right. So Aleph, that letter, let me start over. Hebrew and Aramaic, the big signs only indicate consonants. जो अरामिक के अंदर और जो हिब्रू है उसके अंदर जो बड़े जो साइन आपको सामने ये जो नजर आ रहे हैं, सारे लेटर्स जो नजर आ रहे हैं, ये जो है कॉन्सोनेंट्स हैं, Like Arabic. और अरबी में भी ऐसे है। Let me explain. Okay. इसी तरीके से जैसे हम जो अराब लगाते हैं या अरबी में जैसे अराब लगाते हैं, तो उसके अंदर पे साउंड बनाते हैं, लेकिन जो अबरानी और जो अरामी ज़बान है उसके अंदर साउंड को बनाने के लिए, जैसे ए और ऊ का जो साउंड है उसको बनाने के लिए हम अपने पास से जो है वो अराब लगाते हैं, और उसको जैसे इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं। But in Greek, all right, I'm going to start over. I'm going to do something a little bit different. I want to talk about the languages. Explain that I'm changing right now. Okay, so जो अभी थोड़ा सा आपको इससे पहले जो है कि आप ये डिटेल जाने, थोड़ी सी आपको मजीद एक और इंफॉर्मेशन जो है वो देना चाहते हैं। Map of the Middle East. आपके सामने जो इस वक्त जो है वो मिडल ईस्ट का जो है वो नक्शा मौजूद है। When we talk about the Semitic languages, we're talking about the languages spoken in this area. जब हम सेमेटिक लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो आपके सामने ये जो नक्शा मौजूद है जिसके अंदर आपको सऊदी अरब और दूसरे जो मिडल ईस्ट के जो मुल्क हैं वो सारे नजर आते हैं, तो जिसमें इसराइल भी है, तो ये तमाम जो लैंग्वेजेस हैं वो इस इलाके के अंदर जो है बोली जाती हैं या बोली जाती थी। So when we talk about the Semitic languages, we divide them up by the map. So the bottom half, the languages from this part of the world, we call South Semitic. और जो आप लोगों को ये जो माउस है वो नजर आ रहा है, माउस का, ओके, तो या this part. या सो ये जो नीचे हिस्सा जिसको सिलेक्ट किया गया है, इसको जो है वो जो है जनूबी हिस्सा कहते हैं, South Semitic. Yeah. Whereas languages up here we split into two parts. This is north, but we call it northeast and northwest. और आपके सामने जो ऊपर वाला हिस्सा जो अभी सिलेक्ट किया है, ये इसको हम जो है शुमाली हिस्सा कहते हैं, और शुमाली हिस्से के अंदर जो है वो मशरकी शुमाली हिस्सा है, और उसके बाद मगरबी शुमाली हिस्सा है। जो आपके दाहिनी तरफ है वो मशरकी था और बाईं तरफ जो है वो मगरबी है। और इसको समझना इसलिए जरूरी है कि आपको पता लगे कि जो लैंग्वेज है वो तब्दील कैसे कहाँ पे हुई। So on that first sheet I gave you that had all the Semitic languages on it. सबसे पहले जो आपको जो शीट दिखाई है जिसके अंदर काफी ज्यादा कॉलम्स बने जो आपके पास मौजूद है, और उसके अंदर आप देखते हैं कि काफी ज्यादा जो सेमेटिक जो लैंग्वेजेस हैं उसकी डिटेल जो है उसके अंदर मौजूद है, उनके अल्फाबेट्स मौजूद हैं। The first two columns were Arabic and Ethiopic. तो अगर आप पहला जो देखें तो उसके अंदर अरबी और जो है इथियोपिया की जो लैंग्वेज है इथियोपिक वो मौजूद है। And the next two columns were from here. और जो इससे जो अगले दो कॉलम्स हैं वो इस इलाके के अंदर से हैं जहां पर आपको माउस नजर आ रहा है। So this is Ugaritic, that wedge-shaped alphabet. और जहां पर ये उगरेटिक लिखा हुआ है तो ये जो आपको नजर आ रही है तिरछी किस्म की जो लैंग्वेजेस नजर आ रही है ये वो है Column 3. या
और इसके अंदर अगर आपके पास ये जो शीट मौजूद है तो उस शीट के अंदर आपको तीसरा जो कॉलम है वो नजर आएगा। आप अपनी शीट देखें, जो पहले आपके पास शीट थी, सब अपनी शीट देखें जो सबसे पहले देखी थी, उसके अंदर आपको जो तीसरा जो कॉलम है उसके अंदर आपको यूग्रिड जो लैंग्वेजेस हैं वो नजर आ रही हैं, उनके अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं। और ये आप देखें, ये जो है वो तीरों की तरह के बने हुए हैं सारी ये लैंग्वेज जो है। So Ugarit was a city that was destroyed in 1200 BC. और ये जो उगारिक की जो शहर है जहाँ पर से ये लैंग्वेज बनी है वो तकरीबन जो है मसीह से 1200 साल पहले जो है उस शहर को तबाह कर दिया गया। But they wrote their language in clay tablets that became fired like pottery. लेकिन जब वो अपनी जुबान को लिखते थे तो वो क्या करते थे कि वो एक मट्टी लेके उसको सानते थे, जैसे गूंथते थे, और जैसे हम ईंटें बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। तो वो उसके ऊपर अपना सारा जो लिखना होता था मैसेज, उसके ऊपर लिख के उसके बाद उसको जो भट्टी में डाल के और उसको जो है सेव करते थे अपनी लैंग्वेज को, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई कागज था ना इस तरह की कोई और जो थी उनके पास जो चीज थी जिसके ऊपर वो जुबान को लिख सकते या अपने मैसेजेस को लिख सकते या अपने जो भी उन्हें लिखना होता था वो लिख सकते। So it survived 3,000 years. और इसका मतलब ये है कि ये हजारों साल, तकरीबन 3,000 साल तक जो है वो ये बची रही। And it was discovered in the 1920s. और ये तकरीबन जो है 1920 के अंदर जो ये वो ईंटें थी, जो वो टैबलेट्स थी जिसके ऊपर ये पैगामात लिखे हुए थे, जहाँ पे ये उनका सारा जो टेक्स्ट था वो लिखा हुआ था, तो ये उनको 1920 के अंदर जो है यहाँ से लोगों ने इसको डिस्कवर किया उस इलाके में से। And it's interesting, they used an alphabet instead of a syllabic script. और ये ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि वो जो है ये अल्फाबेट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं In the same order as the Hebrew and Greek alphabet. और बिल्कुल ये ऐसे ही इनके अल्फाबेट्स हैं जिस तरीके से हमारे पास जो है अब्रानी के जो अल्फाबेट्स मौजूद हैं। Okay. Now the Phoenician column, आप अगर इससे आगे जाएं, आप सबके पास मौजूद है हिब्रू से पहले जो है वो एक है लैंग्वेज जिसका नाम है फिनिशियन। सो फिनिशियन जो लैंग्वेज है, it's the coast of Lebanon. तो ये लेबनान का जो इलाका है उसका जो कोस्ट है उसके अंदर इस्तेमाल होती थी। It's the language of this area here. जहाँ पर ये माउस आपको नजर आ रहा है नक्शे पे, ये उस इलाके की जुबान है। And the Phoenicians are credited with inventing the alphabet. और जो फिनिशियंस जो हैं दरअसल इन लोगों ने जो है सबसे पहले जो अल्फाबेट्स हैं इनको अलफबे पे या ABC या किसी भी जो जुबान के हैं, लेकिन जो फिनिशियंस ने सबसे पहले जो अल्फाबेट्स थे इनको शुरू किया। The actual shape of the letters is their invention. ये जो शेप जो है लेटर्स की आपको जो नजर आ रही है मुख्तलिफ शेप्स, ये इन लोगों ने इजाद की है। सबसे पहले इन्होंने जो है वो अल्फाबेट्स जो है इसको यूज करना शुरू किया। And the Phoenicians are a very old culture. और जो फिनिशियंस हैं ये बहुत एक पुराना जो है वो इनका कल्चर था। As you know, they went all around the Mediterranean Sea. और आप ये देखेंगे कि ये तमाम के तमाम जो ये सारा के जो समुंदर है मेडिटेरियन, ये इसके इर्द गिर्द जो थे। In fact, they made it out of the Mediterranean and went around Africa. और यहाँ तक कि ये सिर्फ इसी समुंदर के रास्ते से जो है ये जो है अफ्रीका तक के And came up through here और ये आपके सामने जो है ये यहाँ पर भी मौजूद थे and made it back to their home country. तो देखिए सारा घूम के ऊपर से जो है ये वापस आए और वहां से ये दोबारा जो है वो अपने मुल्क में गए। They were mighty naval power. और इनके पास जो है एक बहुत ज्यादा बड़ी जो थी वो एक जो बहरी फौज जो थी वो इनके पास थी। And they didn't fight with armies, they fought with trade. और वो जो थे वो आर्मी के साथ, वो किसी भी जो फौज के साथ नहीं लड़ते थे, लेकिन जो लोग को तिजारत कर रहे होते थे ये उनके साथ लड़ते थे।
They founded trading colonies all the way around और वो the Mediterranean. और वो इन तमाम जो यहाँ पर इस मेडिटेरियन के इर्द गिर्द जो लोग बसे हुए थे, इनके साथ इनकी जो थी वो जंग चलती थी. And they ended up trading a lot with the Greeks. और आखिर में ये बहुत ज्यादा जो है जो यूनानियों के साथ जो है इनकी जो है फाइट्स हुई. And the Greeks borrowed, they saw the Phoenician alphabet and they borrowed it for themselves. I don't have it on that sheet. Okay. और जब आप देखें तो जो फिनिशियंस की जो अल्फाबेट्स हैं वो तकरीबन जो हैं वो ग्रीक की तरह के हैं. अगर आप दोनों शीट्स को इकट्ठा रखें तो आप देखेंगे कि जब ये ग्रीक के इलाके में गए, ये जो यूनान के इलाके में गए, तो यूनानियों ने देखा कि इनके पास जो है वो जुबान को लिखने के लिए वो अल्फाबेट्स मौजूद है, तो उन्होंने दरअसल यूनानी जुबान के जो अल्फाबेट्स हैं वो इनसे लिए. And the Romans ended up borrowing it from the Greeks. और उसके बाद जब रोम का जो इलाका था उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी जो अपने जो अल्फाबेट्स थे वो जो यूनानी इस्तेमाल करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने लतीनी जुबान में जो है उन्हीं अल्फाबेट्स को जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया. And the Roman alphabet is the base of English alphabets and all Roman-based alphabets since these things. Okay, you have to repeat it. And the Roman alphabet is the English alphabet of today. और जो रोमन्स जो अल्फाबेट्स इस्तेमाल करते थे अपनी जुबान में लतीनी में, जो हमारे पास आजकल जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं वो हमने उनसे लिए. Now, when the Greeks borrowed this alphabet, they were borrowing an alphabet that was built for a different language. और जब ग्रीक्स ने, जब यूनानियों ने ये फिनिशियन से जब अल्फाबेट्स लिए तो उन्होंने इसको मुख्तलिफ जुबानों में इस्तेमाल किया. The Phoenician alphabet does not write vowels. जो फिनिशियंस के जो अल्फाबेट्स हैं उनके अंदर जो हैं वो वॉल्स नहीं हैं. I'm going back to the other sheet. This one. Oh, sure. So when the Greeks borrowed the alphabet from the Phoenicians, You have to drag your screen there. oh, is that showing up on there? Okay, so Yeah. then I'll narrow this. Okay. So when the Greeks borrowed the alphabet from the Phoenicians, और जब यूनानियों ने फिनिशियंस के से जो अल्फाबेट्स जब लिए, they used the letters that stood for sounds that they did not have for the vowels that they needed to write. तो उन्होंने फिर ये किया कि जब उन्होंने लिखने के लिए जैसे कोई चीज लिखनी थी उन्होंने, तो उनकी जुबान में उसका साउंड तो मौजूद था. आप ये बात याद रखें, कोई भी जुबान जो है वो बोली पहले जाती है और उसको लिखना बाद में सीखा जाता है, या वो बाद में उसकी लिखाई शुरू हुई. तो जब यूनानियों ने जो है वो फिनिशियन से जो अल्फाबेट्स लिए तो कुछ जो साउंड्स थे वो उसके अंदर ना थे, तो फिर उन्होंने उसके लिए जो है वो वॉल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया. Hebrew, Arabic, Aramaic, Phoenician, they're all very regular, and you do not need to write the vowels to be able to read it. और अगर आप देखें हिब्रू देखें, अरामिक देखें, और आप फिनिशियन देखें, और आप ग्रीक देखें, तो इन जुबानों को अगर कई दफ़ा आपने पढ़ना हो तो आपको अराब की ज़रूरत भी नहीं पड़ती या आपको वॉल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान है कि आप चाहे ज़बर पेश वगैरह ना लगाएं तो आप तब भी इसको पढ़ सकते हैं. आप पढ़ सकते हैं ना उसके उर्दू कोई भी ज़ुबान ज़बर पेश के अलावा जिससे साउंड बनता है. तो वैसी इसी तरीके से आप इन जुबानों को जो है वो वॉल्स के बगैर पढ़ सकते हैं. That is not the case with Greek. और लेकिन जब हम यूनानी जुबान के पास आते हैं तो ये जो है फिर मुख्तलिफ है. They had to be able to write the vowels. क्योंकि जो यूनानी जुबान है उसको जब भी आपने लिखना है तो उसके साथ वॉल्स का लिखना जरूरी है. So the
Aleph, जो अलिफ है, Greek had no need to write that sound. जो ग्रीक की जो लोग थे, उनको अलिफ का जो साउंड था वो उनकी जुबान में बोला ही नहीं जाता था. So they used that letter for the vowel sound ah. उन्होंने इसी लेटर को जो है वो आह का जो साउंड है उसके लिए इस्तेमाल किया. So the fatha or the lam fatha in Arabic. और जैसे आप जो है बे या बा कहते हैं, So it's an ah sound. और ये जो ग्रीक है उनके पास जो पहला जो लेटर है वो आह है. Now, this column is a capital letter, and this column is the small letters, little letters. और जब आप जो है ग्रीक का जो कॉलम देख रहे हैं तो उसके अंदर जो पहला कॉलम है जहाँ पे अल्फा बीटा लिखा हुआ है, तो ये सबसे पहला जो है ये कैपिटल्स में लिखा है और उसके साथ जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है. So, Aleph as, what do they call you? They call you Kenneth? I mean, Charles? What? Kenneth? Yeah. All right. So, as Kenneth explained, this sound can be written with all the different vowels. और ये जो साउंड है इसके अंदर आप मुख्तलिफ जो वॉल्स लगा के जो हैं आप उसका मुख्तलिफ साउंड बना सकते हैं. So, a, o, u. और जैसे अलफ है इसको हम आ, ए और ऊ का जो साउंड है वो बना सकते हैं. And these will be written with extra signs. और ये जो है हमें Well, just like we have the fatha as the vowel sign for Arabic, we're going to have something similar. ओके. और हम जो है इनको जो है हम कुछ जो है जो इसके जो ज़रबे लगा के या पेश लगा के उसका जो साउंड जो है वो हम चेंज कर सकते हैं. So let's go through some of the letters now. और अभी हम जो कुछ जो लेटर्स हैं अभी आपको सिर्फ बताया गया कि बेस कि कहाँ से शुरू हुई, किन किन इलाकों में गई, और हमारे पास भी ये जिस इलाके में रहते हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वही लफ्ज़ जो हैं वो मौजूद हैं और अभी जो हैं हम इसको अभी सीखना शुरू करते हैं. It's a lot more than I said. I have to explain them sometime a little more. Okay. Yeah. All right. So Aleph, we don't need to explain. Everybody knows how to pronounce it. Okay. आप सबको जो है वो अलिफ बोलना आता है. किसको अलिफ नहीं बोलना आता वो हाथ खड़ा करें. Okay. This is the same letter. These two are the same letter. That's why there's only one number. और ये जो लेटर्स हैं जिससे बाद में हैं दो वो एक जैसे हैं और असली आपको ये दो के अंदर दो लेटर्स नजर आ रहे हैं. The dot in the middle makes a slight difference in pronunciation. जब आप देखें एक जो है जो तीसरे नंबर पे है उसके अंदर एक नुक्ता मौजूद है, उस नुक्ते की वजह से इसका जो साउंड जो है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो काफी तब्दील हो गई है. But it's still the same letter. लेकिन जो लेटर जो है वो वही है. This with the dot और जब इसके अंदर एक नुक्ता लगा हुआ है is b. तो इसको हम बह बोलेंगे. So with the vowels, bo, ba, be, be. तो जैसे जब आप इसके साथ वॉवल्स लगाएंगे तो इसको बा, बे, बो, बी का साउंड जो है वो निकाल सकते हैं. So b. तो जब इसके अंदर नुक्ता होगा तो ये पा होगा. इसी तरीके से जैसे आप जो है जब तीन नुक्ते नीचे लगते हैं तो वो पा हो जाता है, दो नुक्ते ऊपर लगते हैं तो ता हो जाता है. तो लेकिन इसी तरीके से जब आप बा के अंदर एक नुक्ता लगाएंगे तो वो बे का साउंड देगा. The one without the dot लेकिन अगर उसके अंदर नुक्ता नहीं है is v. तो इसको हम वह कहेंगे. ब नहीं होगा, ये वी की साउंड देगा, वाह या वाव की तरह. Again, with the various vowels. V, vo, ve, etc. और जब आप इसके साथ वॉवल्स लगाएंगे तो इसका वी, वो, वे, वाव इस तरह का साउंड जो है वो निकाल सकते. This one and this one, the Hebrew pronounces them the same. Wait, let's pause. Yes. Today, these two letters are pronounced the same.
और आज जो है आजकल ये जो दो लफ्ज इससे पहले इसके बाद जो आ रहे हैं दो लेटर्स ये जो है वो एक ही तरह प्रोनाउंस होते हैं and that's g. तो इसको हम ग कहते हैं Okay, so gi, go, gay. तो जैसे गी गो गे etc. In ancient times, पुराने वक्तों में this one was g जो ऊपर वाला है इसको हम ग कहते थे and this one was g. तो इसको हम नीचे वाला जो है जिसका नाम नुक्ता है उसको हम ग कहते थे But that distinction is no longer preserved. लेकिन अभी जो है वो इसका जो साउंड है वो सिर्फ ग इस्तेमाल होता है वो दो मुख्तलिफ तरीके से आवाजें नहीं निकालते Okay, in the Greek, this letter, capital and lower, is pronounced the. और जब हम यूनानी में जाते हैं तो यही वाला जो लेटर है इसको हम व के तौर पर बोलते हैं I'm teaching you the pronunciation of Greek at the time of Jesus. जो प्रोनाउंसिएशन हम अभी सीख रहे हैं वो यीशु मसीह के दौर की है जब जिस दौर में जो है वो नया ऐतनामा लिखा गया अभी इनका जो मॉडर्न के अंदर इनका जो साउंड है वो फर्क है It's very, very close to modern Greek. और लेकिन ये मॉडर्न जो ग्रीक है इसके काफी करीब है So this is a the. और इसको हम जो है व का साउंड देंगे Okay. The name of this letter is Aleph. और इस जो पहला जो सबसे पहला जो लेटर है इसका जो नाम है वो अलिफ है And these two are Beit. और जो दूसरे दो हैं इनको हम बेत कहते हैं And this is Gimel. और इसको हम जो नेक्स्ट है इसको हम गिमल कहते हैं In Greek, the name of this letter is Alpha. लेकिन जब हम यूनानी में जाते हैं तो पहले जो लेटर है उसका नाम अल्फा है So Alpha, Aleph. जो अल्फा है वो अब वो जैसे हिब्रू और अरामिक के अंदर अलिफ है तो ग्रीक के अंदर अल्फा है You can see that the Greeks borrowed the names of the letters from the Phoenicians as well. और आप ये देखेंगे कि जो ग्रीक हैं जो यूनानी हैं उन्होंने दरअसल जो बोलना भी जो लेटर है वो तकरीबन फिनिशियन से ही लिया है This is Beta. इसके बाद जो Beta. इसके बाद जो सेकंड है वो वेता है And then Gamma. और उसके बाद गैमा है And this is pronounced Ra or Cha. और इसको हम प्रोनाउंस जब करते हैं तो ग जैसे गुब्बारा नहीं होता ग और ख जैसे होता है खालू होता है जैसे खा खरगोश की तरह नहीं खा की तरह होता So this can be pronounced voiced or unvoiced. Or I'll let you explain. और इसको जो है हम जो है जैसे साउंड जैसे ग के साथ और ख के साथ जहाँ जब हम बोलते हैं तो साथ इसकी हम आवाज निकाल सकते हैं या कई दफा जैसे पठान नहीं बोलते वो सिर्फ कह देते हैं तो इस तरीके से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं So using your vocal cords, you can feel it. Versus, and you won't feel the sound out. जब आप अपने जो वोकल कॉर्ड्स जो हैं अगर आप अपने यहाँ पर हाथ रखें तो आप जब इसको बोलेंगे तो आप ख की आवाज है और आपको यहाँ पर फील होगा आपके वोकल कॉर्ड्स के जरिए से कि आप इसको कर रहे हैं आप सारे इसको बोल के देखें जरा अपना हाथ रखें गर्दन पे याद है नहीं रखा तो नहीं रखा और बोल के देखें ताकि आपको फील हो कि ये कैसे होगा Okay. These two letters are the same letter. और ये जो अगले दो जो लेटर्स हैं वो भी एक जैसे लेटर हैं And they're pronounced the same whether they have the dot or not. और इनको हम एक ही तरीके से बोलते हैं चाहे इसके अंदर जो है वो नुक्ता हो या ना हो So this one's pronounced the same without the dot. This one's pronounced the same with or without the dot. This is the other one where there's a distinction. अच्छा अभी हम देखें जो दो नंबर पे है उनके अंदर हम अगर नुक्ता हो तो हम उनको मुख्तलिफ तरीके से बोलते थे ठीक है बैत और वैत से लेकिन जब तीसरी और चौथे की बात आती है तो चाहे उनके अंदर नुक्ता हो या ना हो देख दिस डॉट इज कॉल्ड डैगिश राइट Correct. ठीक है तो इस जो नुक्ते को है वो डैगिश बोलते हैं तो आप लिख लें अपने इसके ऊपर इसी के साथ ही लिख लें जगह बनी हुई ना तो डैगिश बोलते हैं तो ये चाहे इसके अंदर डैगिश हो या ना हो तीसरे चौथे के अंदर तो ये जो है ग या दालत या
का जो साउंड है वो ही देगा, दाल का साउंड नहीं देगा. So you've already told him how to pronounce this? Yeah. So da. Greek, the. और जो ग्रीक हैं ये दा को ना जैसे हमारा ज नहीं होता जहीरा, तो ये ज का साउंड देते हैं. हम कई दफा इसको जो है ना वो डेल्टा कहते हैं जब हम साइंस पढ़ते हैं, तो हम द का साउंड देते हैं. ये द का नहीं है. जो मसीह के जमाने में इसका जो साउंड था वो ज का था. Okay. So a d sound. The name of this letter is Dalet. और इस जो लेटर है इसका जो नेम है, जो नाम है वो दालत है. And then Delta. और ये जो है डेल्टा, इसको हम जो है यूनानी जुबान में कहते हैं. This letter, ha. और इससे जो आगे का लेटर है वो खा है. जैसे हे हाथी नहीं होता, वो या हाथ होता है. And the name of the letter is He. जो लेटर का जो नाम है वो हे है. In Greek, it's a vowel. लेकिन जब हम ग्रीक के अंदर जाएंगे, जब यूनानी जुबान में जाएंगे, तो ये एक वॉवल की तरह होगी. Greek doesn't have the h sound. जो ग्रीक हैं उनके पास ह का साउंड है ही नहीं है. So this is eh. तो यहाँ पर इसको हम एह का साउंड जो है वो करेंगे. और आपको ये शीट इसलिए दी गई तो आप अपने नोट्स साथ साथ बनाएं. जो बताया जा रहा है वो साथ साथ लिखते जाएं, नहीं तो आप भूल जाएंगे. And this letter और जो आगे इसके बाद का जो लेटर है, used to be pronounced what, इसको पहले हम वह बोलते थे. what used to be in the past. But now it's pronounced the. लेकिन अभी जो है इसको हम वह कहते हैं. पहले इसको वह कहते थे, लेकिन अभी इसको वह कहते हैं. So this letter and this letter are pronounced the same, the. तो ये जो है ऊपर जो हमने लेटर देखा पहले जो बैत के साथ है, तो उसको हम जो है वह. And Greek does not have the sound. लेकिन जो ग्रीक है उनके पास वह का साउंड ही नहीं है. Okay. Zion. और इससे बाद जो 7वें नंबर पे है वो है जायन. Is pronounced z. और इसका जो साउंड है वो ज का है. Greek, same sound, और जो ग्रीक है इनके पास इसका सेम ही साउंड है, z. ज का. And what do you call this in? In Greek, this is, I should tell them. The name of this letter is epsilon. और जो 5वें नंबर पे हम पहले दोबारा पीछे जाते हैं, तो डेल्टा के बाद जो ग्रीक का जो लेटर उसका नाम जो है वो एप्सिलॉन. I will give them a chart next week with the names of the letters. और आपको जो एक चार्ट अभी देंगे तो उसके अंदर उनके साथ नाम जो है वो लिखे होंगे. लेकिन अभी आप जैसे पढ़ा रहे हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं. This letter is zeta. और इससे आगे जो लेटर है इसको हम जेट कहते हैं. Het. और 8वें नंबर पर जो है वो है खैत. And it's the exact same sound. और बिल्कुल उसका जो साउंड है वो वही है खैत का. उसको कहते भी खैत का है, उसका साउंड भी खे है. Greek didn't have that sound. लेकिन जब हम ग्रीक में जाते हैं यूनानियों के पास ये वाला साउंड ही नहीं है. So they use that letter form for a vowel. तो वो इसी जो लेटर को जो है वो वॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं. And this sound is A. और इसका जो साउंड है वो ए का है. A. ए. The name of the letter is eta. और इसका जो नाम है वो एटा है. Our pronouncing that A is the way that we're pronouncing the Greek as at the time of Jesus. और ये जो हम जैसे इसको ए बोल रहे हैं तो मसीह के ज़माने में भी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो यही थी. Because if you go to Greece today, they pronounce this letter E. लेकिन अगर अभी की जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें ए का नहीं साउंड, इसमें ई के साउंड से ये पढ़ाई जाती है. And we're pronouncing it like at the time of Jesus. लेकिन हम जो है वो बाइबल के लिहाज से जो है इसको पढ़ रहे हैं. A. ए. All right, now
They can see this, right? आपको ये सारे नजर आ रहे हैं जहाँ पे साइन लिखा है और उसके नीचे, और ये जो है, ये जो अभी आप सीखने लगे हैं, इसका जो दूसरा हिस्सा है, ये बहुत जरूरी है आपको इसका आना और इसको याद करना। आपको मैं एक बात बताऊं, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट, कि जब तक आप इन चीजों को याद नहीं करेंगे जुबान नहीं आएगी, ठीक है? आप ये ना समझें कि ये कोई कहानी है या बाइबल की कोई स्टोरी है जो आप याद रख सकते हैं और बाद में आप लिख सकते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा, आप उसको लिखें अपने पास, लिख लिख के याद करें। जब आप इसको याद कर लेंगे फिर आपको जुबान जो सीखना बहुत इजी हो जाएगा। So the vowels in Hebrew and in Aramaic are written with additional signs to the alphabet. और जब हम अबरानी या अरामी जुबान की बात करते हैं तो उर्दू में जैसे अराब होते हैं, लेकिन जो इंग्लिश में और इन जुबानों में जो है वो वॉल्स का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे जो साउंड जो है वो सही करने के लिए जो है वो ये इस्तेमाल होते हैं। And so I'm using the letter bait, और हम जो है जो बेत का जो लेटर है इसको जो है वो लेते हुए हम मुख्तलिफ जो इसके साउंड जो है वो कैसे निकलेंगे वो हम सीखेंगे। to show where the vowels go when you write them or when you read them in relation to the sign. तो इससे हम ये सीखेंगे कि जो वॉल्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे जब हम इन साइंस को देखेंगे। The vowel is written under the consonant. जो वॉल्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स के जो हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, And it's always pronounced after the consonant. और ये हमेशा बाद में बोले जाएंगे। जिसका जो साउंड है पहले कॉन्सोनेंट बोला जाएगा, जैसे बे है तो उसके बाद जो है वॉल का साउंड आएगा। इसकी जगह कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, सिर्फ बे ब नहीं, कोई और भी कॉन्सोनेंट हो सकता है। These three vowels are all sounds. ये जो तीन जो वॉल्स हैं ये जब भी होंगे तो आ का साउंड देंगे, But the difference in them is length. लेकिन आप ये देखें इनकी जो लेंथ जो है वो मुख्तलिफ तरह की है। This is a, जैसे सबसे पहले जो है वो this is a, सबसे पहले आ है, फिर आ है, and this is a. दिस इज आ, और ये थोड़ा सा लंबा है। So this is very short, and long. जो सबसे पहले है ये बहुत छोटा है आ, फिर दूसरा थोड़ा सा शॉर्ट है उसको बोलेंगे आ, और जो तीसरा है वो लंबा है, वो आ का साउंड देगा। So to pronounce what's actually written here, और अगर हम इसको प्रोनाउंस करें इसके साथ कॉन्सोनेंट के साथ तो This कैसे करेंगे? this would be pronounced va. इसको हम बोलेंगे व, This would be pronounced va. और इसको हम जो नीचे है सेकंड नंबर पे इसको हम बोलेंगे व, And this one would be va. और ये जो है ये थोड़ा लंबा होगा, ये व होगा। Now, I'm going to correct your pronunciation a little bit. It's not va, it's va. इसको हम वह बोलेंगे। Yes, that's much better because va is a different sound. All right, 3 letters, 3 vowels. तीन जो हैं वो वॉल्स अभी हमने देखे, And we are going to practice pronouncing these. और अभी हम इसकी जो है प्रैक्टिस करते हैं कि हमने इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करना। These letters that we learn. Now, we don't have vowels here, so we can't pronounce that row. अगर आप सबसे पहले वाली जो लाइन है इसको देखेंगे तो हमारे पास इसके साथ कोई भी वॉल्स नहीं लिखे हुए, तो हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। Remember, Hebrew reads from right to left. और ये जो हिब्रू जो है ये जैसे उर्दू लिखी जाती है दाएं से बाएं, तो इसी तरीके से इसको लिखते हैं। Urdu is right to left as well. Yes. So this first one, that's the one we're going to read now. जो पहला जो लफ्ज है उसको हम जो है अभी पढ़ेंगे। So we have a consonant, a vowel, and a consonant. हमारे पास सबसे पहले कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवल, और उसके बाद जो है हमारे पास फिर कॉन्सोनेंट है। And this is one syllable. और ये जो सारे का सारा इसको हम एक सिलेबल कहते हैं। This would be pronounced va. इसको हम Sorry. कैसे
वाह, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि ये शॉर्ट जिसका साउंड है इसको हम पढ़ेंगे वाह। everybody say it. और आप सबने ये रिपीट करना है, ठीक है? आपके जो है ना, चाहे माइक ना ऑन हो, लेकिन ये है कि यू वांट टू हियर दैट। I would like to hear them. ओके, सारे अपने माइक जो है वो ऑन कर लें और आप सबकी जो आवाज है वो जैसी भी आए लेकिन आनी चाहिए। जब तक आप इसको बोलेंगे नहीं, आप बाइबल को नहीं पढ़ सकते जो ओरिजिनल जुबान में है। अपने सब जो है वो माइक जो है वो ऑन करें और जैसे इसकी जो साउंड है, जिनके पास ये जो फोन्स है वो थोड़ा सा अपना माइक थोड़ा पीछे रखिएगा ताकि वो बाकी क्लास के साथ कंट्रोल। So who's going to speak for me? ओके, you want to show them too or you can do it? Well, it's hard to go back and forth. I'll tell you what, I have to. Because how they're gonna do it. Okay, point. So let me do that again. I want that one. Okay, सबसे पहले जो हमने जो किया था, जो दूसरी लाइन के अंदर पहला जो लफ्ज है उसको हमने प्रोनाउंस करना है, तो सबने इकट्ठे करना है। करें वाह। Okay, you really need to hear the fact. आपने ख का साउंड जो है वो निकालना है, ठीक है? तो इकट्ठे दोबारा बोलेंगे वाह वाह। आप लोग 50-60 लोग बैठे हुए हैं लेकिन आवाज 3 की आ रही है। वाह। All right, so can we just pick on one group? So can everybody hear everybody? Yeah. All right, so let's take Veronica here. Okay, सबसे पहले जो वर्णिका है वो बोलेंगे। Tell Veronica I want her to. Okay, second. The one I've highlighted. Okay, जो वर्णिका जो second है वो आप उसको open बोलेंगे। I didn't get that. I know, tell her I'm trying to say it. Okay, let's try to say it. अगर आपको याद हो कि ये कौन सा consonant है, उसके बाद इसका जो sound है Yeah, it's a long consonant. What? She gets to look at her alphabet. आप अपने अल्फाबेट से नाम जो है इसका देख सकते हैं। अपने अल्फाबेट्स की शीट्स निकाल लें। This is letter number 2. Talent. लेटर नंबर 2 है। Letter number 2 is talent. You know what I'm saying? Okay, can you repeat it? Is it talent? No, It's a set. It's number 2. It's a bottle. It's a bait. the bait. That one is number 7. The second letter is number 7. जो पहला जो है आपके पास नंबर 2 का कॉन्सोनेंट है और जो आखिर में है वो 7 है। जो 7 है वो Z का साउंड देता है, मैंने इतना आपको बता दिया है। और जो ये जो है वो B का साउंड है। Yes, Veronica, come on. You have to go everybody. Yeah, she's learning. मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि मुझे इसमें से Okay. प्रोनाउंस क्या करना है, मतलब आपको पता है कि सबसे पहले जो कॉन्सोनेंट है वो क्या लिखा हुआ है, जो हाईलाइट किया हुआ है उसको, वो सेकंड कॉन्सोनेंट है, अभी आपको पढ़ाया है, आप अपनी शीट देख सकती हैं। एक 1 सेकंड में। Oh, she doesn't have the sheet? Yeah. Okay. So, who does have the sheet? इसके पास शीट है, वो वहाँ कराची में चलते हैं, कराची से कोई बताए। सबके पास शीट है, लाहौर में है, रावलपिंडी में। Let's go रावलपिंडी. Somebody from रावलपिंडी here. सबसे आगे कौन बैठा हुआ है, वो इसको पढ़े।
All right, well, let's do this. Everybody, अच्छा हर एक जो है वो सुने repeat after me as we go through these. तो आपने ना वो पीछे बोलना है Now, the one highlighted, जो अभी जो हाईलाइटेड हुआ है baz, तो ये है बाज बा the ba, the a, and the z, baz. ब का साउंड है अ का साउंड है ज का साउंड है Everybody say it. तो सब कहें Baz. बास आई कैंट हियर सब नहीं कह रहे सबकी आवाज आनी चाहिए जो किसी को कुछ बोल रहा है ना do it again buzz Okay. Well, let's do this one. अच्छा जी अब ये बिल्कुल एक आप बिल्कुल जो है शॉर्ट साउंड है Ba. बोले That's right. बैह Oh, sorry, there's something it's my fault. Ba. Thank you. तो ये जो था इसको दोबारा हम बता रहे हैं ये है वाह आप बोलें पीछे जब तक आप नहीं बोलेंगे आप शर्माएंगे तो आपको जुबान नहीं आएगी इसलिए आप बोल रहे हैं बगैर शर्माए चाहे गलत बोलते हैं सही बोलते वाह दोबारा बोले वाह Okay. This one. Vad. वाद Vad. किसी के पीछे कोई बोल रहा है कांस्टेंट वो पहले वो प्लीज अपने माइक ऑफ कर दें तो उसको डिस्टर्ब कर रहा है मुझे नहीं पता वो कहाँ पे ये कान से पीछे बहनों की कोई आवाज आ रही है I can't see them चलें alright let's do it again अपने माइक्स ऑन करें तो वाद So, vad. वाद Bug. बाग अब से बाग बाग आप बोले ताकि आपको पता लगे कि ये साउंड कैसे है आपने बाद में बाइबल पढ़नी है ना तो आप पढ़ेंगे कैसे अगर आप बोलेंगे नहीं बोले बग देखिए ये जो नीचे जो लाइन है ना ये एक शॉर्ट एक ही आवाज देती है बग बग Now this syllable, we're getting the two different pronunciations of the bait. आप यहाँ पर देखिए आपके पास बैत है लेकिन बैत की जो दोनों प्रोनाउंसिएशन है उसको हम इकट्ठा पढ़ेंगे Bav. देखिए जब इसके अंदर धागिश होता है तो ये बे की आवाज निकालता है जब धागिश नहीं होता तो व की आवाज निकालता है तो बाव Bav. बाव Now this one, an olive doesn't make a sound. तो जो अलिफ होता है उसका कोई साउंड नहीं है So it's ba. तो इसको हम सिर्फ व पढ़ेंगे ठीक है अभी सबकी प्रैक्टिस हो गई अब हम शुरू से दोबारा पढ़ेंगे सांगला हिल से
ठीक है, सांगला हिल से कोई पढ़ेगा सबसे पहला जो let's tell them. Okay. So all of them again. All right. So va, baz. I'm hearing the C. That's good. Ba. That one and this one are pronounced the same. Ba. Ba. This one is supposedly shorter. So say it a little quicker. Ba versus ba. अब देखें ये तीसरे नंबर पे है और जो आखिर वाला है इसका साउंड तकरीबन एक जैसा है। पहला जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है और जो एंड वाला जहाँ पे टी लिखा हुआ है ये लंबे साउंड को बनाता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे ब और जो दूसरा है वो ब। Yeah, you're still doing an sound. I need an sound. Your mouth needs to be open wide. Now, this one, no dagesh. So va. और जब दागिश नहीं होगा तो ये वह का साउंड देगा। Va. Now this one, vad. और अभी जो आगे हम जाएंगे तो ये दाल है ना तो ये वाद होगा। Vad. Ag. Bav. बाव। So this one has the dagesh, so it's b. Then you have the a, and then b. Bav. Okay, very good. We're going to go down to the bottom line. God. God. दाद। Hog. Hog. Va. Va. So this should be hard. Ha. You do have a head nerd. Yeah. So ha. Pod. आवाज नहीं किसी की भी आई। Say it again. Pod. Now we're going to do, these two have 2 syllables in them. अब नेक्स्ट में देखेंगे तो आपके पास 2 जो syllables हैं। So, a, bav. A, bav. So this is just bav. That's just a, bav. Pause. No, that's not a Z. That's not this letter. This letter and this letter are 2 different. जो जाइन है और जो वाव है वो फर्क है दोनों। So not baz, but bav. Bav. Very good. Okay. Bagad. Bagad. All right, let's see. Let's do it. Let's do all of them again on the last row. God. Hog. Va. Ah. Again. Ha. Had. Above. I'm hearing a Zion. Someone's putting a Z on the end. Okay, जो आप देखें जो जाइन है उसके ऊपर एक पूरा ऐसा एक जो लाइन है
वो दोनों तरफ जाती है। ये हाईलाइट अभी देख रहे हैं, कैन यू हाईलाइट दैट? इसमें देखिए ये जाइन है, And this लेकिन one's ये जो vav. है ये वाव है। Now the difference, look at the difference. This one, the top goes past the vertical. आप ये देखें इसका जो उसके ऊपर एक जो लाइन है वो लंबी है और वो दूसरी तरफ जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक हुक की तरह मुड़ी हुई है। Where this one does not. ये सिर्फ एक जो है वो हुक की तरह है। तो ये जाइन और वाव के अंदर ये फर्क है। Look at these two letters. This one does not connect. This one does. Ha and ha. लेकिन यहाँ पर आप देखें ये जो दोनों लेटर्स हैं, एक जगह पे ये जो है वो कनेक्टेड है और दूसरा कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ह और ख है। So if you got now the dalet looks something like that, but it's much wider. लेकिन जब आप दालत देखेंगे तो वो थोड़ा सा लंबा है। All right, so let's try these two again. Abav. Bagad. Now let's make it real hard. Let's do all of them. Ba. Bav. Bag. Bad. Va. Make sure they make it a va, not a ba. ये व का साउंड है, व। Va. Ba. So do you see the difference between that and this? That one versus this one. Here's the, आप दोनों के इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस जो है वो आपको पता है? One has dot in it. एक के अंदर जो है वो दागिश है और एक के अंदर नहीं है, और एक जो है वो बिल्कुल शॉर्ट साउंड है, ठीक है? तो और जो दूसरा है उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो लंबा साउंड है, लेकिन फिर भी वो शॉर्ट साउंड है एक। Medium sound. so ba, जो अभी है ये बा है, va. और ये जो है वो वीक व। जब भी दागिश आएगा तो ये बा का साउंड दे, जब दागिश के बगैर होगा तो वा का साउंड दे। Baz. Bah. I didn't get the sound of second I last. pronounced it wrong. Tell them. ये प्रोनाउंस जो था वो गलत जानबूझ के किया है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रोनाउंस करना है। It's va. I pronounced it as if it had the dagesh. जब दागिश होगा तो ये बे का साउंड देगा, और जब दागिश नहीं है तो वाह का साउंड देगा। It's supposed to be va. सेकंड ईयर की बुक्स है ना, उसमें देखिए एसएस वाला क्वेश्चन निकाल कर उसमें मार्शल। What did she say? All right, no, she's आप जो है ना अपने जो प्लीज यहाँ पर जो मौजूद है वो कोई और बात ना करें। Okay. God. I'm hearing somebody say dog. They're saying it back. It's not, it's God. it's God. Hog. Hag. Hug. Va. Ba. Ah. Ba. Had. Had. Above. Above. Bagad. Bagad. Okay, that's now 10:30. Yeah. So tell them we've learned the first third, Mm-hmm. and we're going to have more sheets to them this week. Okay.
So And we're gonna do like this next week too. let them take them this picture. So Okay. a little bit zoom out, so it's good. They need the vowels probably. आपके पास अगर कैमरा है तो आप इसकी जो है तस्वीर खींचे। वैसे मैं अभी आपको हैंडआउट्स भेज दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, आप इसकी तस्वीर खींच लें। ये वाला है जो वॉल्स का साउंड, ताकि आप जो है वॉल्स का साउंड है और ये नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा जो है वो बहुत शॉर्ट है, उसके बाद थोड़ा सा लंबा है और बहुत ज्यादा लंबा साउंड है, और है सारे के सारे जो साउंड है वो एक ही तरह के। So I will make a vowel sheet for you. तो आपको जो है जो इसकी जितनी भी वॉल्स की जो शीट है वो आपको मिल जाएगी इसी वीक के अंदर। In the Greek, the vowels are actual letters. लेकिन जब हम यूनानी ज़बान में जाएंगे तो उनके जो वॉल्स हैं वो लेटर्स की तरह हैं। और alright, that's good. All right, so you and I will get sheets. Yeah, let's stop sharing. वो वाले Nice.